बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। ECCE ट्रेनिंग के लिए टीचर्स और केयर गिवर ने किस तरह से अपना अकाउंट बनाना है, यानी अपने अकाउंट को किस तरह से रजिस्टर्ड करना है। इसके अलावा आज की वीडियो में बताऊंगा 18 ट्रेनिंग मॉड्यूल में से कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। ECCE ट्रेनिंग के लिए आपने ब्राउज़र में ECCE trainings.pk लिखना है, या आप गूगल प्ले स्टोर से ECCE लिखेंगे तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। आप ट्रेनिंग साइट से भी कर सकते हैं और ऐप से भी कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो इन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स का टाइम फ्रेम 27 फरवरी से 8 मार्च तक है। सादा क्राम अकाउंट को बनाने के लिए टैब में अपने स्कूल का कोड लिखेंगे, इसके बाद अंडरस्कोर और T1, T2, T3 वगैरह लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पंजाब 123 है। अपने अकाउंट को सेव करने के लिए रिमेंबर यूज़र नेम को ऑन करना है और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका न्यू अकाउंट बन जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। इसी तरह से केयर गिवर का अकाउंट बनाने के लिए स्कूल का कोड आएगा, इसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद C1 आएगा। ECCE अर्ली चाइल्ड एजुकेशन केयर एंड एजुकेशन का मुखफ़फ़ है। इसके मॉड्यूल की तरतीब कुछ इस तरह से है। First of all is pre-analysis activity. First module is Introduction to the ECCE ECCE 2020 and it has 2 parts. Next is Quick Revision. Second module is Responsibilities of a Caregiver. Third module is Learning Styles and it has 2 parts. Fourth module is Theoretical Perspective on ECCE. After that is Let's Recall activity. Fifth module is Creating a Positive Learning Classroom Climate and Emotional Environment. Sixth module is Importance of Conducive Physical and Cultural Environments. Learning Corners and United Nations Convention on the Rights of the Child. The seventh module is the daily routine of an ECCE classroom. Eighth module is Personal, Social and Emotional Development. Ninth module is Language and Literacy Development. After that is Listening and Speaking. Then is Reading Skill in ECCE and last one is Writing. After that is Quick Revision activity. 10th is Basic Mathematical Skills and Numeracy in the ECCE. 11th module is Knowing All About the World Around Us in Early Years. 12th module is Development of Scientific Knowledge and Skills in the ECCE classroom. 13th module is Health, Hygiene and Safety in the ECCE classroom and Child Safety. 14th is Creative Arts in the ECCE classroom and after that Let's Recall activity. 15th is Importance of Nutrition for Growth and Development. 16th is Observation as a Child-Centered Assessment Strategy and Checklist Portfolio as a Child-Centered Assessment Strategy. 17th is Managing a Multi-Age Classroom and last one module is Behaviors and Gender Equality. Finally is Post-Analysis activity.